Good afternoon, students. Welcome to Management Accounting online class. Today we will solve some numerical questions related to uh, changes in working capital. Okay. So as you can see on your screen, there is a schedule of changes, or you can say there is a balance sheet. Okay. Basically, it is a balance sheet statement, and with the help of this balance sheet, we will find out the changes in working capital. So they are assets and liabilities. So as per the previous lecture, I told you about that working capital changes in working capital. We find out changes in working capital for two accounting period. Okay, that's why they here in the balance sheet there is a two column. First is 2013, and second is 2014. So 2014 is a current year and 2013 is a previous year, and it is this balance sheet as per the date of 31st March, means end of the financial year, right? So these are the details of assets, and these are the details of liabilities. So under the assets head, there is cash in hand, cash in bank, book debts, inventory, bills receivables, prepaid expenses, short-term investment, accrued interest, building, plant and machinery. And the liabilities under the liability head, the items are accounts payable, notes payable, bank overdraft, outstanding expenses, provision for bad debt, share capital, debenture, and motivation. Okay, so basically what we are doing here, we find out the changes in the working capital. Okay, with the help of this balance sheet. So for that purpose, let me share the word file. One second. Okay, so this is the schedule of changes in working capital. I already shared the format of working capital in previous lecture. तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड करे थे उनको मालूम होगा शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट इस तरीके से प्रिपेयर होता है, राइट? So, in this statement, we basically find out what are the changes in assets and liabilities comparison between two accounting period, that is from 2013 and 2014. Okay, so there is a so first we find out the changes in the assets, and then we find out the changes in liabilities. So basically, when we find out the working capital, we include the current assets and current liabilities. We already discussed about the current assets and current liabilities in our previous lecture, and what are the items are included in the current assets and current liabilities. In short, we can say that all the assets which can be convertible into cash within current accounting periods are comes under the head of current assets, and all the liabilities which can be payable within one accounting year, all so those items come under the current liabilities. We already discussed in previous lecture about items of current assets and current liabilities. Okay, so here I'm solving the question or preparing the schedule of changes in working capital. So first of all, there is a current current assets, current assets, and the current assets heads first is cash in hand according to the question. Okay, cash in hand, and then after that there is मैं एक काम कर रही हूँ स्टूडेंट, मैं जो है नेक्स्ट कॉलम में इसको लेके जाऊँगी, आप कंफ्यूज मत कीजिए. Now then book debts, then is cash in bank, and after it inventory, then bills receivables, and then prepaid expenses, and then short-term investments, short-term investment and accrued interest.
accrued interest. Okay. So as per the balance sheet in the 2013, cash in hand is 5,000 rupees. Okay, and in 2014, cash in hand is 7,000. Okay, what is the amount of book debts in year 2013, students? 12,000 is that 12,000. Okay, and in the year 2014, that is 11,000. And then cash at bank is 7,000, and in the year 2014, it's 9,000. Then inventory are 4,000 rupees in year 2013 and in 2,000 in the year 2014. Then bills receivables are 2,000 and in 2014 it is 1,500. Then prepaid expenses, that is 200 and 300. Then short-term investments are 5,000 and then get and then accrued interest are 1,000 in the year 2013 and in 14 is 600. Okay. So now, as you can see in the last column, that is changes in working capital. First column is increase in debit and decrease in credit, right? सो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो कैश इन हैंड है या बाकी आइटम जो करंट एसेट्स के हैं वो दोनों अकाउंटिंग पीरियड में इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं. अगर वो इंक्रीज होते हैं तो दैट विल बी क्रिएटेड एज अ डेबिट, एंड अगर वो डिक्रीज हुए हैं दैट विल बी क्रिएटेड एज अ क्रेडिट, राइट. सो आप देखिए 2013 में जो कैश इन हैंड था वो था 5,000 एंड 2014 में दैट इज 7,000. मीन्स ये 2,000 रुपीज से जो है वो इंक्रीज हुआ है, एक भी डिक्रीज नहीं, राइट. तो हम यहाँ पे इसको 2,000 लिखेंगे एंड इट विल बी लाइक ब्लैंक. नेक्स्ट आप देखिए बुक डेप्थ में 1,000 रुपीज का डिक्रीज हुआ है बिकॉज जो 2013 में 12,000 था और 2014 में 1,000, राइट. तो अभी हम यहाँ क्या करेंगे, ये डिक्रीज हुआ है, ओके 1,000. देन आफ्टर दैट अभी नेक्स्ट आप देखिए कैश एट बैंक अगेन 2,000 रुपीज से जो है इंक्रीज हुआ है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, इट विल बी लाइक दैट. एंड देन इन्वेंट्री जो है वो 1,000 रुपीज से डिक्रीज हो गई है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हम ब्लैंक करेंगे इसको और यहाँ पे इसको हम 1,000. फिर देन 500 रुपीज से इंक्रीज हो गए, 500 इंक्रीज एंड देन ब्लैंक. No, it's not an increase, it's a decrease. Then again 100 रुपीज से इंक्रीज हुआ है तो हम यहाँ पे 100 करेंगे और इसको यहाँ पे ब्लैंक. एंड देन 3,000 रुपीज से इंक्रीज हुआ है तो हम 3,000 रुपीज से यहाँ पे इसको इंक्रीज कर देंगे और ये ब्लैंक रहेगा, ओके. एंड देन 4,000 रुपीज 400 रुपीज से ये डिक्रीज हो गया है, हम इसको डिक्रीज वाले कॉलम में छोड़ देंगे. ये इस तरीके से यहाँ पे हमने दो अकाउंटिंग पीरियड में ये देखा कि जो हमारे करंट एसेट्स से उनमें दो अकाउंटिंग पीरियड में क्या इंक्रीमेंट हुआ है और क्या डिक्रीज हुआ है. तो इंक्रीज जो हुआ है उसको हम इंक्रीज कॉलम में लिखेंगे, दैट विल बी क्रिएटेड एज अ डेबिट, एंड जो डिक्रीज हुआ है दैट विल बी क्रिएटेड एज अ क्रेडिट. तो यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया. अभी जब कल की प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था तो हमने ये डिस्कस किया था जो वर्किंग कैपिटल होता है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज. So now as per the format, now we will total the total current assets because हमें यहाँ पे current assets को total करके current liabilities से इसको less करना होगा. So next step is to add all the current assets of year 2013 and year 2014. हम increase and decrease जो है इन amounts को हम add नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने just identify किया है कि हमारी previous year से current year में क्या क्या increment हुआ है और क्या क्या decrease हुआ है, right? तो यहाँ पे हमें ये फाइंड आउट करना है कि टोटल एसेट्स क्या है, ना कि हमें टोटल इंक्रीज और टोटल डिक्रीज करना है. तो नेक्स्ट इज टोटल, नेक्स्ट स्टेप इज टू टोटल दी करंट एसेट्स. टोटल करंट एसेट्स, तो अभी आप इसको टोटल करिए तो ये टोटल आपका आ जाएगा टोटल आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स 36,200. आप इसको टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 40,000.
ये आपका टोटल करंट एसेट्स हो गया फॉर द ईयर 2013 एंड फॉर द ईयर 2014. नाउ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमें करंट लायबिलिटीज को प्रिपेयर करना है. सो करंट liabilities. Current liabilities में कौन कौन से आइटम्स होंगे? That will be payable within one accounting. So first है हमारा accounts payable. तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ अकाउंट पेएबल एंड देन नोट्स पेएबल. Then next is bank overdraft. Next is outstanding expenses. Then next is provisions for bad debts. Provision for bad debts. तो हम इसके अमाउंट को भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं. Amount is 8,000. Then 6,000. हम साथ ही में इसके इंक्रीज और डिक्रीज को भी कैलकुलेट कर लेते हैं. तो आप देखिए कि यहाँ पे 2,000 रुपीज का डिक्रीज हुआ है. राइट. ओके. सो आप यहाँ देखिए अब क्योंकि हमने वहाँ पे एसेट्स में इंक्रीज एंड डिक्रीज को देखा था, अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, क्योंकि हमारी लायबिलिटीज जितनी हमारी कम होगी उतना ही ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा. राइट. तो हमारे लिए लायबिलिटीज का कम होना जरूरी है. तो यहाँ पर वर्किंग शेड्यूल में हम क्या करेंगे कि जब आप यहाँ लायबिलिटीज में देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो डिफरेंसेस जो होंगी जितना आप कम लायबिलिटीज होगी इट मीन्स कि आपके लिए लायबिलिटी कम होनी चाहिए, और जितनी लायबिलिटीज बढ़ेगी उसको हम उसमें हम डिक्रीज में रखेंगे. राइट. सो आप देखिए यहाँ पे 8,000 माइनस 6,000 है, मीन्स हमारी जो 2,000 लायबिलिटीज जो है 2,000 रुपीज की वो लायबिलिटीज हमारी कम होगी. इट विल बी लाइक दिस. एंड देन आप देखिए नोट पेएबल जो है वो 3,000 रुपीज के हैं. राइट. और जो आपका 2014 में है वो 2,000. अगेन आपका 1,000 रुपीज से जो है लायबिलिटी कम होगी. राइट. नेक्स्ट इज 4,000. देन 3,000. अगेन 1,000 रुपीज से आपकी लायबिलिटी जो है वो ये ऊपर से कम हुई. और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 300. देन 200. तो आप देखिए यहाँ पे अगेन 100 रुपीज से आपकी कम हुई. ब्लैंक कर देते हैं. एंड देन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो है वो आपके 500 रुपीज के हैं और 700 रुपीज के हैं. तो आप देखिए 200 रुपीज से आपकी जो लायबिलिटीज है वो जो है आपकी बढ़ गई है. तो ये विल बी क्रिएटेड. राइट. तो ये इस तरीके से आपको करना होगा. तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि आप जब यहाँ पे डिफरेंसेस देखेंगे दो अकाउंटिंग पीरियड का, तो एसेट्स के लिए आपको कैसे करना है कि आपका अगर एसेट्स बढ़ता है दैट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू. तो आप यहाँ पे डेबिट को इसमें रखेंगे, एसेट की प्राइस अवेलेबल रहती है. और लायबिलिटी जब आपकी कम होती है दैट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर यू. तो वो लायबिलिटी जो होगी वो यहाँ पे जो कम जो बढ़ेगी वो क्रेडिट साइड में जाएगी और जो कम होगी वो डेबिट साइड में जाएगी. तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है. ठीक है. नाउ लास्ट स्टेप इज टू टोटल द करंट एंड लायबिलिटीज. टोटल करंट लायबिलिटीज. आप इसको टोटल करेंगे तो चलेगा. तो टोटल आपका जो आएगा टोटल आ जाएगा आपका 15,800. एंड आप इसको करोगे 2014 के ईयर को तो आप आ जाएगा 11,000. राइट. तो ये आपका करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज टोटल है. अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारा होता है टू फाइंड आउट दी वर्किंग कैपिटल. राइट. सो वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए टोटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज है. Okay, students. So for that purpose, we will find out the current working capital. So working capital इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. राइट.
तो अभी आप देखिए बच्चों, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज को आपको डिडक्ट करना है। तो आपको क्या करना होगा बच्चों कि यहाँ पर आप फाइंड आउट कैसे करोगे। सबसे पहले आपका काम ये है कि 2013 में आपके करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज दोनों का डिफरेंस क्या है। तो 36,200 माइनस 15,800 आप करेंगे तो वो अमाउंट यहाँ पे आप करेंगे। ठीक है, तो आप 36,200 minus 15,800 करेंगे तो यू विल गेट 20,400, राइट। एंड आप जब 2014 का जब आप करोगे तो आपका आ जाएगा 40,400 माइनस 11,000, राइट। तो आपका आ जाएगा 28,500। तो आप यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे आगे लिख सकते हैं 28,500 माइनस 20,400। ये आप डिडक्ट करोगे तो जो भी आपका अमाउंट आएगा आप अमाउंट यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था बच्चों तो कितना आया था 20,400, और जब उसको फाइंड किया था तो 28,000 हमारा 500, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जब इसको लेके आए तो ये अमाउंट यहाँ पे, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपका यहाँ पे वैल्यू लेके आए। अब आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कि दोनों में इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो आप देखिए 20,400 2013 की वर्किंग कैपिटल थी, और 28,500 जो वर्किंग कैपिटल 2014 की है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है इंक्रीमेंट हुआ है, राइट। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 8,100 आने चाहिए। लेट मी चेक द 500 माइनस 2,400, yes, yes, okay. So the answer is yes, Lisa, very good, you are right, 8,100. So we will increase हुआ है तो we will यहाँ पे इसको जो है, yes, राइट ईशिता, वेरी गुड ईशिता। तो आप देखिए ये इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है ईशिता एंड निष्ठा। 8,100 ये हमारा क्या हुआ है बच्चों, डिक्रीज हुआ है, राइट। ओके, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है बच्चों, इंक्रीज हुआ है, वेरी गुड, इंक्रीज, वेरी गुड, ओके। तो अभी हम यहाँ पे इसको यहीं पे नीचे मेंशन कर देते हैं बच्चों इसको, सेकेंड यहाँ पे मैंने लिख देती हूँ, yes, net increase in working capital, okay. This amount 8,100, right, 8,100 ये आपका आंसर आ गया। अब लास्ट में आप इसको और टोटल कर लीजिए तो आपका और फाइनल टोटल करेगा, राइट। तो यहाँ पर इसको टोटल कर देते हैं, ठीक। अब इसको टोटल कर दीजिए कितना आ जाएगा 28,500, ये अगेन यहाँ पे आपका 28,500। एंड आप फाइनल यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज जो डेबिट और क्रेडिट था आपका वो उसको आप टोटल कर दीजिएगा 11,200, और इसको आप टोटल करेंगे तो ये भी 11,000। देखिए लास्ट में जो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज आपकी इक्वल हो गई, और आपका जो इंक्रीज एंड डिक्रीज था जो डेबिट एंड क्रेडिट था वो भी आपका इक्वल हो गया। तो ये इस तरीके से आप अपना आंसर को कैरी कर सकते हैं कि आपका जो कैलकुलेशन है वो सही है कि नहीं, कि एट द एंड ये जो है यहाँ पे ये टोटल होगा। So this is the way how we find out the changes in the working capital, and this is the format how we prepare the schedule of changes in working capital. Okay? It is just like आपने जैसे consolidated balance sheet बच्चों आपने prepare करी थी, और इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना मैंने आपको सिखाया था, ये उसी तरीके से है। बस एक एक्स्ट्रा स्टेप इसमें ये बढ़ गया है कि आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो है उसको आपको डिडक्ट करना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग आउट द वर्किंग कैपिटल। Okay, so any question or any doubt regarding the schedule of changes in working capital? No? Okay. So let's move to the other topic, that is fund flow statement. Now we will learn how to prepare the fund flow statement. Okay. So for that, let me show the slide again.
Okay, is it visible to all of you? Fund flow statement screen. Okay, so we have discussed about the fund flow statement, what is fund flow statement and how fund flow statement work and why fund flow statement are preparing, and when fund flow statement are preparing. We all discussed this topic in your yesterday class. Okay, so we will directly move to the preparation of statement of financial fund flow statement. So this is the format and how we prepare the fund flow statement in the statement form. Okay, see here the fund flow statement as per the statement form. So basically here we use the two heads. The first one is sources of fund and second is the application of fund. So what is sources of fund means fund from operation, issue of share capital means आपका जो फंड है, जो कंपनी का जो फंड है, वो किन किन सोर्सेस के थ्रू आ रहा है. ठीक है, like funds from operation, that is trading profit, like issue of share capital, like issue of debentures, like raising long term loans, like sale of fixed assets and long term investments, non trading receipt like dividend receipt, gift donations, decrease in working capital, increase in public deposits, right? So these are the sources of fund for application. एंड यहाँ पर आप उसको टोटल करना पड़ेगा और यहाँ पे सारे आप उसके न्यूमेरिकल जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है, और उसके बाद आपको टोटल करना पड़ेगा. नेक्स्ट हेड इज एप्लीकेशन ऑफ फंड. एप्लीकेशन ऑफ फंड मीन्स आपको यहाँ पे उन सारे फंड्स को लेके आना पड़ेगा जिसको आप जो है एप्लीकेबल करेंगे. दैट इज लाइक funds lost in operation, that is trading loss, consumption of preferred share capital and buyback of equity share capital, redemption of debentures, repayment of long-term loans, purchase of fixed assets and long-term investments, non-trading payment composition, payment of dividend and tax if it is not CL. Okay. कल हमने जब वर्किंग कैपिटल के बारे में डिस्कस किया था बच्चों, तो हमने उसमें एक चीज़ ये भी डिस्कस करी थी कि आपका जो टैक्स और डिविडेंड होता है वो परसेंटेज में रहता है. ठीक है, तो आपको वो परसेंटेज को जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा. और उससे भी पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि टैक्स और डिविडेंड जो है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है बच्चों. तो आपको ये देखना है कि जो आप प्रिपेयर कर रहे हो स्टेटमेंट, उसका टाइम पीरियड क्या है. ठीक है, जैसे टैक्स है तो आपका फाइनेंशियल ईयर में ही एप्लीकेबल होता है, उसके बाद में डिविडेंड का भी एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड में ही आप डिविडेंड पे करेंगे. तो आपको वहाँ पे ये बहुत ध्यान देना है कि जो आपका टाइम पीरियड टैक्स के साथ दिया गया है, जो परसेंटेज दिया गया है वो कैसे है, और आपको वहाँ पे इसको कैलकुलेट करना है. Right, so increase of working capital, drawing in case of sole trade and partnership firm, and increase in intangible assets. Right? So ये सारी चीजें जो है वो आपकी एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में एप्लीकेबल होगी. और आपको इसमें और ज़्यादा डिटेल में अगर स्टडी करना है तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं बच्चों. इन सारी सोर्सेस ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड के बारे में डिटेल में दिया गया है. मुझे बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सब अवेयर हो इन सब आइटम ट्रांजेक्शन से. ठीक है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्स क्या होता है, इंक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल मैंने आपको अभी पढ़ाया ही है, इंक्रीज इन टेंजिबल एसेट्स मैंने आपको टेंजिबल एसेट्स के बारे में भी कल डिस्कस किया था. तो आप सब इसके बारे में अवेयर हैं. फिर भी आप अगर आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपके बुक्स में सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि सोर्सेस ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में क्या क्या आइटम्स हैं. राइट, और अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप इससे क्वेश्चन कर सकते हैं. Okay, so the first step is to prepare the statement form of funds flow statement, and second is format is the accounting form, right? यहाँ पर हम accounting form का yes, Archita and Nishta, Ishita, my voice is clear to all of you. Okay, Nishta. So this is the accounting form. अकाउंटिंग फॉर्म इज सिंपली जैसे आप लेजर प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही आपको जो आपने स्टेटमेंट फॉर्म प्रिपेयर किया था उसे लेजर फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है,
आप देखिए यहाँ पे सेम वही सारी चीजें हैं, आपको यहाँ पे लेके आना, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक दो स्टेप्स जो है वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। वो कैसे होगा, मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, राइट। सो दिस बेसिकली आपको जब भी फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप मेक श्योर कि आपको ये दो फॉर्मेट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। इसीलिए ये क्वेश्चन जो फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है मोस्टली आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन पे बेटा पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा और ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, बट इट विल बी इजी फॉर यू अगर आप सोर्सेस ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड्स के जितने भी ट्रांजेक्शन है, जितने भी आइटम है, वो अगर आपको क्लियरली पता है तो आप बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन यहाँ पे आप देखिए मैंने एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दे दिया है, ठीक है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, राइट। तो फर्स्ट वन इज फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, sale of investment, sale of building, issue of share capital, issue of debentures, purchase of investment, purchase of machinery and increase in working capital, okay। तो ये सारे आपको जो है इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको इसमें से इंफॉर्मेशन से जो कैटेगराइज करना है सोर्सेस ऑफ फंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, आपको देखिए बच्चों स्क्रीन में देखिए लिखा हुआ है, मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ, यस। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाना है या कौन सा स्टेटमेंट बनाना है, राइट। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों ही तरीके से स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों कि हमारे कौन कौन से ऐसे इंफॉर्मेशन जो दिए गए हैं उनमें से कौन कौन सा इंफॉर्मेशन है जो हमारा सोर्सेस ऑफ फंड में आएगा या एप्लीकेशन फंड, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और आप यहाँ पे देखिए फॉर्मेट में तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो वो आपका सोर्सेस ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, तो इसका अंडर दी सोर्सेस ऑफ फंड। द नेक्स्ट चीज आपका जो है वो है आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आपकी, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी वन ऑफ द सोर्स ऑफ फंड, देखिए सोर्स ऑफ फंड। आप उसके बाद नेक्स्ट देखिए तो आपका सेल ऑफ बिल्डिंग की अनदर द सोर्स ऑफ फंड, ओके। इशू ऑफ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिबेंचर इज ऑल कम अंडर द सोर्सेस ऑफ फंड। So number one from number one to number five is all items are related to the sources of fund. Then purchase of investments and then purchase of machinery and increase in working capital. These all are the application of fund. तो इस तरीके से जब भी आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने को आए तो आप पहले आप उसको कैटेगराइज कर लीजिए कि इन्फॉर्मेशन जो आपको दी गई है और इन्फॉर्मेशन में कौन कौन से आइटम जो है वो सोर्स ऑफ फंड में आएंगे और कौन से आइटम जो है आपके एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएंगे, राइट। तो फिर हम सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। वन सेकंड, मैं आपको वर्ड की फाइल जो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था उसको शेयर कर लेती हूँ। Is it visible to all of you? Okay. अभी हम फंड फ्लो स्टेटमेंट जो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट आपका प्रिपेयर होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, राइट। ये फॉर्मेट मैंने आपको पढ़ाया था स्टेटमेंट understand that the fund that this format of fund flow statement is according to the statement flow. So आपको यहाँ पे जो है दो कॉलम्स क्रिएट करने होंगे sources of funds, okay। सोर्सेस ऑफ फंड, तो सोर्सेस ऑफ फंड में सबसे पहला हमारा था फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ओके। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस
एंड देन सेकेंड हमारा जो इंफॉर्मेशन थी वो थी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. So sale of investment. Then next था हमारा बच्चों sale of building. ठीक, sale of building. Then next था हमारा issue of share capital. Issue of share capital. Then issue of debentures. Issue of debentures. और जो हमारे अमाउंट्स थे वो अमाउंट्स आपके थे फंड फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट था 1,42,000. वेरी गुड. नेक्स्ट हमारा था 28,000. देन नेक्स्ट है 25,000. And then next is 50,000. And the last, the issue of the debenture amount is 1,000. Okay. आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट अभी हमारा लास्ट नेक्स्ट स्टेप है इनको इसको टोटल करना है. ओके, तो आप इसको टोटल कर लीजिए. एंड टेल मी व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड. टेल मी. यस, टेल मी स्टूडेंट्स. It is almost 3,45,000, right? Okay. Now next is a source application of funds, right? Application of, okay. So application of funds like the purchase of investments, purchase of machinery, okay. Purchase of investment and purchase of machinery, right? And the last one is increasing working capital. The amount is 80,000 and 1,70,000 and then 95,000. अगेन हमें इसको टोटल कर लेना है. टोटल आप करेंगे बच्चों तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 3,45,000. यस, 3,45,000. Yes, Nista, you are right. It's the 3,45,000. Yes, 3,45,000. This is the total. So this is how the fund flow statement is prepared. So through the fund flow statement, in this statement form, you basically find out the sources or total amount of sources of fund and total amount of applications. Now in the accounting format of fund flow statement, we find out these amount इन दी लेजर फॉर्मेट. ना हम सिंपल से वर्ड में बोले तो हम लेजर फॉर्मेट में इसको फाइंड आउट करेंगे. तो अभी आप देखिए बच्चों कि जो हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया प्रिपेयर किया है उसमें सोर्सेस ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड जो है इसको ट्रांसफर कर दीजिए लेजर फॉर्मेट. देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है. राइट. यस, तो आप यहाँ पे सिंपल इसको फॉर्मेट को प्लेस कर देते हैं. ओके, एंड हम यहाँ पे इसके अमाउंट्स को भी ट्रांसफर कर देते हैं. राइट. सेम एप्लीकेशन ऑफ फंड्स को भी हम यहाँ पे ले आ रहे हैं, उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं. ओके,
right? And after that हम इसको total कर देंगे, total is 3,35,000. Okay, आप यहाँ पे इसको total कर दीजिए, paste and then here the same. Okay, students. So this is how we prepare the fund flow accounting statement, and this is how we prepare the fund flow uh, statement according to the statement form. Basically, दोनों का purpose क्या है? It's to find out the total amount of sources of fund and total amount of application of a fund in an organization, okay, or in a business, right? Okay, students, I hope you understand how to prepare the fund flow statement and how to prepare the schedule of changes in the working capital. The questions are very important and it need practice. Okay? So, more question आपको solve करने हैं और more practice आपको करना है, right? So, that's all for today.